Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So this is an orientation class about RBI Grade B General Exam. As you know, RBI Grade B consists of basically three different exams. One will be the RBI Grade B General, other is RBI Grade B DEPR, that is Department of Economic Policy and Research, and third is RBI Grade B DSIM, Department of Statistics and Information Management. So in fact there are three different exams within the RBI Grade B, but this is an orientation class all about RBI Grade B General. So I will be basically explaining the course content of the RBI Grade B General, what we will be providing, that is phase 1, phase 2 lectures, test series, study material, that means how we will be conducting the class and what we are expecting from you. So but to start with, I will say that this is a class to be exclusively for RBI Grade B General. That means we are not mixing anything related to other banking exam or other exam, competitive exam. This is exclusively for RBI Grade B General. So first of all, I will explain the course content, the minimum cutoff, sectional cutoff, what are the content, phase 1 qualifying in nature, phase 2 weightage of that, interview weightage of that. So there are three different stages, phase 1, phase 2 and phase 3. So phase 1 you can say preliminary, that means a sort of screening, that means the marks of that phase 1 will not be counted in your final selection, but you have to qualify there. Sectional qualification is there as well as the overall cutoff you have to meet. So everything related to RBI Grade B General, I think in this orientation class I will be addressing all your concern. So to start with, just you can refer to this content part. This RBI Grade B General. Now last year we are starting the lecture or class for 2023 exam, but last year the number of vacancy in general category it was 109 and overall it was 238. So enough number of vacancies as compared to DPR, जहाँ पे around 25-30 vacancy होते हैं, you can say about 10 times more vacancy RBI Grade B General का होता है, ठीक है. और it is written general, it means it is not requiring any specific knowledge about the economics or specific knowledge about the stats, unlike DPR and DSIM, which require specialization in economics and specialization in stats. That means those two exams you can write after your post graduation, and this exam you can write after your graduation exam. And in graduation subject का कोई requirement नहीं है कि you have to be familiar with any particular subject. It could be from any stream, that is why it is called as general. And but you must have first division, that means 60% marks in your undergraduate course. So the phase 1 exam basically consists of 4 different sections. One will be your general awareness, but the weightage of that general awareness, number of question will be 80 marks for general awareness. Quantitative aptitude 30 question, 30 marks. English language 30 question, 30 marks. Reasoning 60 question, 60 marks. So overall 200 question will be there and 200 marks, but you have to attempt all those 200 questions within this time frame. Overall examination time period will be of 2 hours. Now in every section you have to qualify here. Sectional cutoff will be decided by the examination conducting body, but in every section you have to qualify, that means you have to meet that minimum cutoff as well as the overall cutoff. So in every section, that means you cannot ignore any particular section. And if you want to know what will be the sectional cutoff, what was the sectional cutoff in the previous exam, then just refer to this. This is your cutoff for 2022. Out of 80 general awareness वाले section में the minimum cutoff was 12. Minimum cutoff was basically 12. For reasoning section it was 9 marks out of 60. General English
4.5, quantitative aptitude 4.5, but total minimum was 63.75. So out of 263, that means around 31-32%. That is the overall cutoff you have to meet. But obviously it is a screening. But अगर cutoff lower आ रहा है, it indicates that the question level will be difficult. Level of difficulty will be there. But your phase 1 is qualifying in nature. That means you are not aiming to maximize your score in paper phase 1 only. You have to maximize in phase 2. You have to maximize in the interview stage also, because phase 2 के marks और interview के marks add हो करके final merit list को determine करेंगे. But phase 1 you have to clear. But सिर्फ clear का objective लेके नहीं चलना है, यहाँ भी आपको significantly higher होना है from your cutoff. That means there is no chance that there could be any mistake in phase 1, because you have to qualify only then you are appearing in phase 2 exam. So general awareness, reasoning, language, quantitative aptitude और overall score का ये cutoff for general category and different categories. So just keep that information in mind, but remember it is a qualifying paper. But जो content general awareness वाले section में होगा, that general awareness section question, if you go by this syllabus, the reasoning section, what are the different subsection in the reasoning? Quantitative ability, English language and general awareness. ये current affairs लिखा हुआ है, but इस current affairs के various dimensions होंगे. That means it will take a lot of time to cover. Remember, some question will be factual in nature and some question will be conceptual in nature. Fact के basis पे भी question होंगे, concept के basis पे भी question होंगे, and there will be question based on application of the concept as well. So you have to know the fact, you have to know the concept related to that, and you must be in a position to apply that concept. But application of concept require practice, or the fact that requires basically your memory power. So you have to memorize a lot of fact in that general awareness section. You have to do a lot of practice in your quantitative ability. A lot of practice is required in the reasoning section, particularly because the level of question in the reasoning section is quite tough. तो रीजनिंग और क्वांट पे आपको बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, और जनरल अवेयरनेस में फैक्ट को याद रखना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी प्लान्स, national institutions, banking terms, that means the nature of question will be more or less, it will be more in terms of your economics and familiarity with the financial system or the monetary management. तो obviously for that purpose economic survey का रोल भी होगा. सर्वे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ के रखना है. सर्वे के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेगा, and that will also help in your descriptive paper also, economic and social issue के अंदर भी. So obviously what will be the various sources that will be explained in detail. That means the class will be very comprehensive. It will be covering all the aspects. That means if you are attending this, if you are joining us, that means you don't have to purchase any separate book and material. Everything will be provided by us, and it will be very exhaustive in nature, in the sense that not only it will be covered by the test series. In every class you will be getting a problem set of around 20-25 questions. I said in every class, and the class will be spread over a period of 6 months, Monday to Saturday. So in every class if you are getting that around 20-25 odd question, so it will be I think more than 5,000-6,000 question overall for phase 1 exam. तो phase 1 के अंदर आपको number of question ज़्यादा रखने हैं, practice ज़्यादा करनी है, और जो कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना. तो रिमेंबर, आफ्टर दिस ओरिएंटेशन क्लास ऑफ माइन देयर विल बी अ सेपरेट ओरिएंटेशन फॉर रीजनिंग सेक्शन, separate orientation for quantitative ability, separate orientation for your English language as well as for the general awareness section. That means every faculty will be taking their own orientation. जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का अपना ओरिएंटेशन है. आई एम जस्ट गिविंग द ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ द RBI Grade B General Exam. So phase 1, you know the content parts,
the subsectional part, sectional qualification and the weightage, but it is a qualifying exam, so you have to qualify in this paper first of all. Now when you move from phase 1 to phase 2, so I will say that first thing is that your phase 1, $200, but this is a qualifying, so you have to qualify here sectional as well as overall. Now move to phase 2. Within phase 2 there will be 3 separate paper: economic and social issue, 1 paper, then general English and finance and management. So again I refer to that. Phase 2, grade B, phase 2 exam pattern. Paper 1 is economic and social issue. The nature of this phase 2, 50% objective type, 50% descriptive type, 50% objective, and there will be 30 question objective. Out of those 30, some question will have a weightage of 1 mark, some question will have a weightage of 2 marks, and for the descriptive 6 question will be given to you. You have to attempt any 4. Out of that 4, obviously there will be some section wise in that 50% descriptive as well, because some question will carry 15 marks and some question will be carrying 10 marks. 15 into 2 और 10 into 2 मतलब 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा. इसको मैं अगर क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल पेपर 1 इज economic and social issues. Economic and social issues, the objective pattern, $30 question will be there, but weightage will be 50 marks. So out of that 30 questions, some question will carry 2 marks, some question will carry 1 marks. ठीक है. And the descriptive part, you have to attempt any 4. You have to attempt 4. Attempt 4 out of 6 question. जो 4 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बेसिकली इसमें 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स 30 मार्क्स हियर एंड 20 मार्क्स हियर. 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पैटर्न. ठीक है. एंड दैट पैटर्न विल रिमेन सेम इन योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन एज वेल. जनरल जो लैंग्वेज वाला पेपर है इसमें एससी, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब 3 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर. सो इन योर फेज 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का जो पैटर्न होगा सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन दी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. सो बी क्लियर, इट इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव. तो फेज 1 completely objective, but phase 2 is a combination of objective as well as subjective. But again, since it is economic and social issue, even in the question is objective, it is not only fact based. Remember, the nature of question will be, some question will be your requiring factual information. Like question अगर आपसे कहते हैं कि GDP का ग्रोथ रेट फॉर 2021-22, तो वो तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया. या question is basically on the fiscal deficit. So what is the amount of fiscal deficit in terms of percentage? That is a factual information. But if I say what is the meaning of effective revenue deficit? What is the meaning of effective revenue deficit? What is the significance of change in the repo rate or change in the reverse repo rate या marginal standing facility rate? तो इन सब का टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए, सिग्निफिकेंस मालूम होगा और उसका जो एक्चुअल रेट है ऑन दैट डे वो भी मालूम होना चाहिए. तो वो रेट मालूम करना तो फैक्ट हो गया. कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करेंगे देन यू मस्ट नो दैट कंसेप्ट, एंड देन वी कैन से दैट सपोज इफ द क्वेश्चन सेज
if there is an inflationary situation in the economy, which of the following needs to be done? और उसके बाद फिर further option है like increasing the bank rate, reducing the bank rate, increasing the CRR, reducing the CRR, increasing the SLR, reducing the SLR. तो ये टर्म मालूम होना चाहिए कि what do you mean by SLR, what is the amount of SLR. फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में जितने भी कमिटीज हैं उस कमिटीज का रिकमेंडेशन, लाइक नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन है, उसमें नरसिम्हन कमेटी 1, नरसिम्हन कमेटी 2 मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या थे. तो दैट मीन्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, तो बैंकिंग सेक्टर और मॉनेटरी मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होना चाहिए. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, माइन्यूट से माइन्यूट जो एस्पेक्ट होगा वो आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए. एंड वो वी कैन से दैट वो टिप्स पे होने चाहिए आपके, मतलब वहाँ पे टाइम नहीं लगाना है कि आप वहाँ सोच रहे कि व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. दैट मीन्स अगर वो इन्फॉर्मेशन सारे टिप्स पे हैं then you will be saving time and the accuracy will also be more. So factual information will be there, then conceptual part will be there, like questions on GST. अब GST, as you know, GST is based upon destination principle. Destination principle का मतलब होता है जो प्रोडक्ट का डेस्टिनेशन होगा या सर्विस का डेस्टिनेशन होगा, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स विल बी on that agent. So if you are conducting this class and if you are attending that class, so the final destination will be the student. So basically GST is imposed, we have to pay, but it is imposed basically on the basis of destination principle. तो अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री हो गया, बट फॉरेन कंट्री पे हमारा ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होगा टैक्स इम्पोज करने के लिए. दैट इज वाई एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड इन द जीएसटी सिस्टम. अब जीएसटी के अंदर स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, आईजीएसटी है. जीएसटी के भी अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम है. दैट मीन्स इन सम कंट्रीज ओनली सेंट्रल कलेक्ट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट, इन सम स्टेट कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द सेंटर, बट वी हैव अडॉप्टेड बेसिकली अ ड्यूअल सिस्टम वेयर वी हैव स्टेट जीएसटी एज वेल एज द सेंट्रल जीएसटी. एंड तो अगर क्वेश्चन को अप्लाई करके पूछे, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, we are conducting this class from Delhi, you are attending this class let us say from in Kerala or Tamil Nadu or in Andhra, तो जो फीस आपने पे किया उसके अंदर भी जीएसटी होगा, बट विच जीएसटी, इज इट स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बोथ और आईजीएसटी. बिकॉज पॉइंट ऑफ ओरिजिन दिल्ली हो गया, डेस्टिनेशन हो गया दूसरा स्टेट, तो ये दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो गया. तो इन दैट कंडीशन दे विल बी आईजीएसटी. तो आपके बिलिंग के अंदर वो आईजीएसटी आ जाएगा. जब आप प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है कि स्टेट जीएसटी आपने कितना दिया, सेंट्रल जीएसटी कितना दिया, और अगर इंटर स्टेट होगा देन रिमेंबर इट विल बी एन आईजीएसटी. तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे. सो यू मस्ट बी नोइंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द जीएसटी एज वेल एज यू मस्ट बी अप्लाइंग दैट कंसेप्ट इन द रियल लाइफ. तो कंसेप्ट होगा और उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी होगा. Concept and that concept will require application as well. So on the objective section you must know the fact, concept, and you have to apply. But in the descriptive section you must know the detail. Like for example, if I say what could be the likely impact of GST on the Indian economy, or what are the major concerns or challenges in GST, तो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको डील करने हैं, बिकॉज पब्लिक फाइनेंस एक मेजर सेक्शन होगा आपके सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज. नाउ देयर कुड बी क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड व्हाट पॉलिसी मेजर्स वाज टेकन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया. तो पॉलिसी मेजर्स लिखने हैं. अब पॉलिसी मेजर्स जब आप जनरल फॉर्म में भी अगर आप आंसर लिख लेते हो, रिमेंबर अल्टीमेटली यू हैव टू स्कोर हियर. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर डिपेंड करता है कि हाउ एग्जैक्ट यू राइट and how organized you are in your presentation. So if you write in the general format ki government has done this, government has done that, that will be an answer. But if you present it in a structural manner, that there are fiscal responses, monetary responses, structural changes, institutional changes, supply side change, तो अगर ये technical word आप वहाँ use करते हैं then you will be definitely getting more score there.
So since it is a competitive exam, your objective is basically to score more as compared to others. But to score more as compared to others, you must know fact, you must know the concept, and you must apply that concept. Or in order to answer that descriptive question, you must practice it a lot. Only when you practice it a lot, then only you can reproduce it. Reproduction का मतलब है, suppose a very good paragraph is written in economic survey about food management or inflation challenges or about MSME sector. If you just copy that paragraph in your notebook, try to learn it, write it 1 or 2 times, and if you are able to reproduce that sentence or paragraph in your examination, then that will help you to score more. So these type of paragraph, whether you are reading it from economic survey or from newspaper or from any economic book, try to write it as it is. I'm saying try to write it as it is, मतलब एक्चुअल में वो याद होना चाहिए. बट याद तभी होगा जब आप उसे बार बार लिखोगे, लिख करके आप उसको याद करोगे. दैट मीन्स practicing or writing daily answer will be an important part. So you have to practice it a lot. आपको बार बार वो लिखना है. तो क्लास का अप्रोच होगा कि बार बार आपसे डिस्क्रिप्टिव लेक्चर के अंदर भी, क्लास के अंदर भी और वैसे भी आपको 1 or 2 आंसर यहाँ पे क्लास के अंदर लिखवाए जाएंगे. तो राइट इट रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस. सपोज 6 महीने मैंने आपने 2 क्वेश्चन भी अगर लिख रखे हैं तो अराउंड 400 क्वेश्चन आपने डेली आंसर लिखा है. Out of those, obviously some question will come. Remember, you have to answer basically in descriptive only 4 questions. But you are basically preparing a pool of questions. उस pool of question में let us say 500 to 600 question होगा. उस 500-600 question में ultimately you have to write only 4. आपका जो स्कोर होगा वो तो डिपेंड करेगा ये 4 क्वेश्चन आपने कैसे लिखा है. तो जनरल आंसर लिखते हैं तो वो मार्क्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा स्टेप मार्किंग होगी. तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर जनरल आंसर अगर लिख रखा आपने तो स्कोर ज़्यादा नहीं करोगे. और अगर आप एग्जैक्ट लिख रहे हैं, इफेक्टिव लिख रहे हो, यू आर आंसरिंग और एड्रेसिंग द क्वेश्चन, बट दैट विल कम विथ प्रैक्टिस. सो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट वर्ड प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन ऑर्डर टू स्कोर मोर इन फेज 2, एंड दैट फेज 2 स्कोर इज गोइंग टू काउंट. फेज 2 का जो स्कोर है वो काउंट करने जा रहा है. मतलब आप जो मैक्सिमाइज करोगे इस फेज 2 के अंदर, तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो भी क्लियर हो जाएगा. बिकॉज वेटेज ऑफ इंटरव्यूज यू कैन से हार्डली 20% होगा. 300 मार्क्स का फेज 2 होगा और 75 मार्क्स का इंटरव्यू स्टेज होगा. सो योर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन 375. सो यू हैव टू मैक्सिमाइज आउट ऑफ दैट 300. सो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू syllabus, if you want to know the syllabus of phase 2, economic and social issue, this economic and social issue covers growth and development, one topic, Indian economy, globalization, and social structure in India, demographic trends, urbanization and migration. Questions like whether India is in a position to reap the benefits of demographic dividend or whether it will turn out to be a demographic disaster. अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एड्रेस कर रहे हैं तो आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में सोचना नहीं है, आपके पास वो ऐसे आंसर प्रिपेयर्ड होने चाहिए जिसको आपको वहाँ पे डायरेक्टली लिखना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सर्टेन पॉइंट्स शुड बी रिटन, and why it is called demographic window, and whether India is in a situation to realize that benefits of demographic dividend, or it could be turning out to be a demographic disaster in the context of high rate of unemployment prevailing in the economy. So these type of live question you may be expecting in your social issue section as well. Then the growth and development, there could be poverty alleviation and employment program. ठीक है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके में क्या क्या वीकनेसेस हैं, लूप होल्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और लाइक क्वेश्चंस लाइक इंडिया हैज जनरेटेड जॉबलेस ग्रोथ और इट इज सर्विस लेड ग्रोथ. सो इफ इट इज अ जॉबलेस ग्रोथ, व्हाई वी फाइंड ग्रोथ बट इट इज नॉट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ जॉब. द फ्यू रीजंस आई कैन हाईलाइट इन दिस ओरिएंटेशन क्लास एज
the nature, the composition of growth is now more towards service sector. The weightage of service sector in the GDP is more, approximately around 60% now. But the employment elasticity of service sector is less. It means 1% growth in service sector will create less employment as compared to 1% growth in the industry. Because service sector का जो growth है वो productivity led growth है, टेक्नोलॉजिकल led growth है. तो इस तरीके के पॉइंट्स बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है और उसका जो सिग्निफिकेंस होगा, इम्प्लीकेशन होगा, वो एक्सप्लेन करना है. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आंसर विल बी प्रिपेयर्ड इन द क्लास के अंदर. वो इन्फॉर्मेशन आपको डिक्टेट कराएंगे, वो कंप्लीट नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा और उसको आपको रेफर करना बार-बार और ट्राई करना है कि जिस ऑर्डर में क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा उसी ऑर्डर में आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे. तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग in this growth and development section also, like sustainable development है, उसके dimension क्या है, what is the meaning of sustainable development. So you have to explain exactly how it has been defined in some international conventions. You can write in your own words also, there is no problem with that, but point ये कि you are writing that in order to get a score, and the marking scheme is that if you are writing from the international convention, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे डिफाइन किया गया हम उसे एज इट इज अगर लिखते हैं तो स्कोर ज़्यादा आता है. तो ऑब्वियसली इफ यू नो दैट यू बाय राइटिंग दिस यू कैन गेट स्कोर मोर, देन ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट. तो इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में भी होगा, लाइक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल टेक्निक होता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव होते हैं. तो ऑल दोज डिटेल यू हैव टू कवर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Indian economy will cover economic history of India. So pre-independence section is also there, like question on drain theory. So how the colonial period led to the drain of wealth from India. So what were the sources of that drain? तो वहाँ पे अलग अलग जो ड्रेन के सोर्सेज है वो एक्सप्लेन किया आपने. रेलवे का कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज डेवलपमेंट. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री सेक्शन. Change in the industrial and labor policy, monetary and fiscal policy since 1991. तो आफ्टर रिफॉर्म 1991 के बाद का, और उसमें फिर इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट. तो अगर ये एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर मार्च में लिख रहे हो 23 में, तो बिफोर दैट वी विल बी हैविंग दैट सर्वे एज वेल एज बजट. तो सर्वे और बजट आपको अपडेट करके रखना, जैसे ईयर में भी आप एग्जाम दे रहे हैं जो भी लेटेस्ट सर्वे और बजट है. तो सर्वे का रोल होगा, इट विल हेल्प नॉट ओनली हियर, इट विल हेल्प इन अदर सेक्शन एज वेल. डिफरेंट जो एस्पेक्ट होगा उसको कवर करने में सर्वे का हेल्प होगा, बिकॉज सर्वे के अंदर अराउंड 9 और 10 चैप्टर्स होते हैं सेपरेटली फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फूड एंड इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर. तो वो जितने भी अलग अलग सेक्टर है उन सबको अगर आप रेफर करके रखते हो, it will help in other preparation as well, like in public finance, Indian agriculture, service sector in the economy. And if you are getting question from this sector, then answer and use the language of economic survey more, because वो well crafted, well written होता है और government documentation होता है, तो you can just simply quote it. There is no confusion in that. So the paper 1 will be basically consisting of that economic and social issues. So more will be explained in the lectures, and paper 2 is mainly your English. So it will be containing essay, précis and reading comprehension. Third paper is finance and management. So it is divided into 2 parts. Finance, so financial system, RBI function and conduct of monetary policy. तो आरबीआई के कंडक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी और उसका जो डिज़ाइन है वो सारा, मतलब टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं ये इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाला सेक्शन होगा, और यहाँ से जो टू सम एक्सटेंट कहीं कहीं कॉमन फैक्टर्स होंगे, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी का डिज़ाइनिंग. तो डिज़ाइनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम मनी ग्रोथ टारगेटिंग टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग टू इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग. तो आप डिज़ाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से अगर आप फेमिलियर होंगे, देन यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज डिजाइन. नाउ देयर कुड बी वेरियस फॉर्म्स ऑफ टारगेटिंग.
money growth targeting, that means economy, central bank is targeting to have a given growth rate of money, or it could be targeting inflation rate, so inflation targeting. So what is the meaning of inflation targeting? You have to explain that part, but nowadays more we talk about interest rate targeting. And that interest rate targeting has been explained by Taylor's rule. What is the exactly meaning equation of that Taylor rule, and how you can apply that Taylor rule in order to have interest rate targeting? So there are different concepts. तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव कंट्रोल टेक्निक हो गए, उसका एक्सपांशन हो गया, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, बट उतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी आज के डेट में नहीं आता. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBI. यू मस्ट नो इट, बट डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन एट दिस लेवल. मतलब द नेचर ऑफ क्वेश्चन, द लेवल ऑफ क्वेश्चन अब आज की डेट में काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, एडवांस हो गया है, तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन अब नहीं पूछेंगे. जो रिसेंट, बिकॉज जो पॉलिसीज है वो डायनेमिक होते हैं, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स इंटरेस्ट से टारगेटिंग का जो कंसेप्ट है वही नहीं है, तो वो ओल्ड क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वो नए क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा. सो यू मस्ट नो दैट. देन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्ट्रक्चर, SIDBI, Exim Bank, NABARD, NHB, इन सबका रोल, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8, उसका रिस्पॉन्स, and what are the learning from that global financial crisis for Indian economy? Can it repeat in Indian economy? There are crises in the neighboring country like Sri Lanka. What is the learning from that crisis? Financial market, primary and secondary market, foreign exchange market, bond market, equity market. मतलब जो syllabus है वो काफ़ी exhaustive है. You must be knowing each and every aspect from the financial system. So financial system of Indian money market. So you must know financial instruments. What is the meaning of derivative? What is the meaning of spot rate? What is the meaning of forward rate? What is the meaning of currency swapping, hedging? ये सारे टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, और उस टर्म्स को फिर, बिकॉज ये सेकेंड स्टेज का एग्जाम है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फ्रॉम टू एंगल. वन इज द ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज द डिस्क्रिप्टिव. तो दोनों एंगल से प्रिपेयर करना, मतलब कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए, एग्जैक्ट रेट भी मालूम होना चाहिए, अप्लाई भी करना है कंसेप्ट को, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में वो लिखना भी. एंड देन जनरल टॉपिक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जैसे क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो ये वेल रिटन है, इंडिया स्ट्रेटजी एट द रेट ऑफ 75, एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक चैप्टर है. उस चैप्टर के अंदर वेल डिफाइंड है. फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली रेफर्स टू व्हाट, बैंकिंग फॉर द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड. तो इस तरीके के वर्ड्स अगर आप आंसर में लिखते हैं, देन इट विल बी वेरी गुड. तो क्लास में बेसिकली वो जो भी बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज होंगे, जो भी पर्सन या फैकल्टी क्लास ले रहे हैं, वो सारे बेस्ट सोर्स को अवेलेबल प्रोसेस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाएंगे. मतलब आपके नोटबुक में होगा. इट इज़ नॉट दैट कि मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ एंड देन आई विल लीव यू टू सर्च फॉर दैट मटेरियल. इट इज़ नॉट योर जॉब, it is our job. We will be searching the best material, we will be providing you the best source, so that you have to just learn your own notes, write it again and again, and reproduce it in the exam. I'm sure you will be getting good marks if you do that. So this third paper is finance and management. So it is basically divided into two different parts. Finance और management वाले part में आ जाएगा. तो within management फिर motivation है, अलग अलग पर्सनालिटी का मीनिंग है. तो मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट है, मोटिवेशन है तो उसके अलग अलग थ्योरीज होंगे. तो डिफरेंट थ्योरी, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी होगी, मैस्लो की थ्योरी होगी. तो ये जितने भी अलग अलग थ्योरीज होंगे, यू हैव टू बेसिकली नो दोज थ्योरीज
from objective point of view as well as the subjective point of view. लीडरशिप के अलग अलग मोड होते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, देन व्हाट डू यू मीनिंग बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर इम्पोर्टेंस. तो अगेन जो कंटेंट है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम in order to cover these aspects. So grade B second phase will be taking more time. Second phase will be taking more time. Second phase के अंदर content ज़्यादा है, but phase one objective in nature है. Although qualifying होगा, but उसके अंदर आपको practice करने के लिए टाइम चाहिए. वहाँ practice required है, तो for practice करने के लिए टाइम चाहिए, और यहाँ पे content का coverage ज़्यादा है, तो for that purpose you need more time. So your phase one clear. phase two के अंदर 3 different paper हो गए. तो if I write the format here, then phase one 200 marks, ये qualifying हो गया. phase second, इसके अंदर 3 पेपर हो गए, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, लैंग्वेज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, 100 each, 300 marks. Your score of that 300 marks will be counted in for stage 3 rather, which is an interview. ठीक है, लास्ट ईयर ये बेटे आप 75 है, तो 300 marks and 75 marks. So out of 375 जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके लिए 375 इम्पॉर्टेंट है. Your merit list will be prepared based upon that 375. Clear? So in short, basically phase 1 qualifying, phase 2 and phase 3, that is interview stage. So we'll be providing you assistance from for interview guidance as well once you clear this phase 2. So it is comprehensive in the sense that starting from phase 1 till your interview stage, we will be helping. Once you join us, basically you are getting support for phase 1 total, phase 2 complete, as well as for the interview. And the course is designed to approximately, it will take 500 hours of lecture for phase 1 and phase 2, plus there will be test. Remember, these tests are in addition to your daily exam. So in the test series, so far we have taken 10 tests, but if required we will increase that test. The breakup of that 10 tests is that 5 tests is for phase 1, because that is critical, and 5 tests for phase 2. But phase 2 के अंदर 3 पेपर है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू 2 टेस्ट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 2 टेस्ट, and English 1 test. Clear? This test series is included in your course. That means if you are taking the course, you don't need to pay separately for the test series. You will be getting model answer of those tests, as well as there will be discussion video. There will be discussion video. You can attend that discussion video. If you are attending the class offline, surely you can come and attend the discussion. Even if you are joining it online, you can join it live. So the format is basically, the class is on offline mode as well as online. In online you can see that class live at same point of time. If you are unable to see that, it will be followed by recorded. That means that lecture will be remaining in your portal till your exam. ठीक है, जैसे लेक्चर नंबर 1 हो गया, आपने सेम पॉइंट पे देख लिया, तो लाइव आप उसे देख लीजिए, और जो आपके पोर्टल पे होगा वो आप रिवीजन पर्पस के लिए रख लीजिए. So it will be live as well as recorded. So those who are attending it online, one concern for the online students is how they can clear their doubts.
So for doubt purpose, what we can do is that after completing the lecture, there will be a separate session for the doubt clearance. In that doubt clearance session, you can ask that question from your home. That means it will be interactive. But during lecture, it may not be interactive, but because the class get more disturbed. So, but in the discussion part, it will be made live. That means you can ask your question, and the video will also be staying there recorded. And recorded ये नहीं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये नहीं होता है कि आपको 24 आवर सिर्फ दिए जा रहे हैं रिकॉर्डेड के लिए, उसके बाद वो वीडियो हट जाएगा. वो वीडियो आपके पोर्टल पे एग्जामिनेशन तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता. मतलब अगर आपके पास लेटर से 300 या 200 लेक्चर होंगे, ऑल लेक्चर विल रिमेन देयर. So the mode is clear. It is online as well as offline, and the batch is starting from 1st of September 2022. Clear? It is starting from 1st of September and it will take approximately 6 months to complete, and Monday to Saturday will be the lecture. That means in a week 6 lecture of 3 hours, और in one day there will be 2 separate topic, and occasionally कभी कभी one topic भी होगा, मतलब one subject भी होगा. But in one class, that means 3 hour की class है तो 1.5 hour for 2 different subjects. ठीक है. So course has been designed properly, and it will be completed over a spread of 6 months. You can join it later also, no problem. But because it will be circular in nature, that means जिस topic से आप join करेंगे उस topic तक आने तक आप class को attend कर सकते हैं. Online अगर आप कर रहे हैं then there is no issue, because जब आपको access मिलेगा तो starting from lecture 1 you will get the access. Clear? So I think I have explained everything related to this RBI Grade B General, the course content, and some model sample question has been attached just to have some idea what type of question you are expected. But more will be explained in the class. And one thing I will say at the end, that since it require various dimensions, your mathematical ability, reasoning, general awareness. Within general awareness there are many different dimensions. Then your language paper English, then economic and social. So economic you can separate, social you can make separate, finance you can make separate, management you can make separate. So this entire course will be taken basically by a team of faculty. I will have a role, but I will be supported by other team members. And for reasoning we will have separate, so you will be getting a reasoning orientation class. जो भी class faculty होंगे, respective faculty will be taking their own orientation for reasoning, for maths, for language, for finance and management, for general awareness, and so on. Clear? So it will be basically taken care by a team. So if you are joining us, remember we promise you to provide with best quality in terms of the class content and also in terms of the support. That means we are available in order to help you. जितने भी पर्सन क्लास को ले रहेंगे उनका नंबर आपके पास होगा. You can call to them directly and you can resolve your concern there. You can come to us, you can come at center at any point of time. You can resolve your doubt here as well. So we'll be providing you the complete coverage, study material, assistance from phase 1 till interview stage. Clear? So that's all for this orientation class. I think I have addressed all your concern. Still, if you have any more concern and if you want to ask any specific question, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आई विल जस्ट राइट माय phone number also. You can call me also directly for any sort of assistance. And the alternate number of office ठीक है, regarding any admission you can call on this number. और जो साइट है उसके साइट पे all information has been uploaded. You can visit our site blisspointstudies.com. So on that site also all information are there.
You can take this course from site also, or you can contact us also. Clear? So thank you for watching this. Bye.